हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज राज फ्रॉम बी EduCARE एंड आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 140 140। इनका नाम है सारांश सिंह। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सारांश फॉर सच अमेजिंग स्कोर एंड अमेजिंग रैंक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फाइन। सो आप मुझे बताइए कि जब आपने आपका स्कोर देखा तो आपको कैसा लगा कि आपका रैंक, क्योंकि 60,000 से ज्यादा बच्चे, 60,000 प्लस स्टूडेंट्स, एंड आपका रैंक 140, कैसा लगा आपको? Sir, it was fantastic. Scoring well in exam like MSCT is great. It ओके। shows that you have. हम्म। सो Okay. फाइन, तो आपको बहुत अच्छा लगा। एंड आपके घर वालों का क्या Hello. Yes, sir. रिएक्शन था? They were very happy. उनको जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 140 आई है। In between 60,000 students, a lot number. True, true. So why law? Why you have decided to make career in law? Sir, actually, if I would be a lawyer or a judge in future, I would be first in my family. अच्छा। And it sometimes motivates me to become first generation lawyer or a judge. ओके, ग्रेट। तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक अपना जो जनरेशन है उसमें आप कुछ अलग चीजें ऐड करना चाहते हैं, कुछ अलग चीज आप उसमें ऐड Yeah. करना चाहते हैं। फाइन। कितने दिनों से आपने इस एग्जाम के लिए तैयारी की? Uh, sir, this was my second attempt. ओके। I gave it last year also, and I got Sankara Chavan Law College, Pune. ओके। But I decided not to take this, and I decided to take a break and re-exam this. ओके। So I want only the top colleges that like GLC, ILS Pune or KC Mumbai, ओके। not not below this. ठीक है, अभी आपका स्कोर तो काफी अच्छा है ना। यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या मिलना चाहिए, क्या लेना, क्या लेने वाले हो आप? जीएलसी आप सोच रहे हो या Yes, फिर आप आईएलएस सोच रहे I am confidently sure that I would be get ILS Pune. हो? ओके। Finger crossed. Mhm. यस, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग आईएलएस। एंड आपकी Yes. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? आपने कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो मोस्टली अगले साल 2024 में या 2025 में एग्जाम लिखेंगे। तो आपने Yes. कैसे प्रिपेयर किया और क्या उनके लिए टिप्स हैं? तो सर एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन सेल्फ से ही की है हम्म। और जो उसके लिए मैंने कुछ बुक रिकमेंड मतलब रेफर करना चाहूँगा जो फ्यूचर स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए, जैसे इंग्लिश इज इजी, वर्ल्ड पावर मेड इजी, ट्रू। और आर एस अग्रवाल हम्म। फॉर द मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. राइट। दीज आर द बुक द law student can refer for the entrance exam like MSCT, CUET, etc. फाइन। सो और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो आप देना चाहते हो आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर हो जाए, ये कैसे मैनेज करना है, कहाँ कहाँ से कितना पढ़ना है? क्योंकि लीगल सब्जेक्ट में क्या हो जाता है, वी ऑल नो, ये जो एग्जाम है ये बहुत ही लिमिटेड चीजों को पूछा जाता है। पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, मॉडरेट लेवल का आता है। तो वहां पे आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? Yes, sir. I think in exam like MSCT, one should prefer to know the law. Because इस एग्जाम में लॉ बहुत आता है और if a student crack this exam, he should also develop his critical and reasoning ability. If you want to become a future lawyer or a judge, you should be a critical thinker. That should be a main preference. According to me, these are the areas that one student should improve. ओके, परफेक्टली फाइन। सो काफी अच्छा लगा बात करके सारांश आपके साथ। एंड एज वी Okay. ऑल नो, आप जो कॉलेज चाहोगे वो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। एंड यू आर Yeah. सेइंग दैट यू आर लुकिंग फॉर आईएलएस, सो हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ है कि आपका आईएलएस में सिलेक्शन हो जाए, आप लॉ करो, आप एडवोकेट बनो, एंड आपको जिस फील्ड में भी जाना है वहाँ पे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी हमेशा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल सर टिप्स मैं एक फॉर द बात फ्यूचर और एस्पिरेंट्स। जी। सर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा. श्योर।
कि प्रिपरेशन तो मैंने सेल्फ से की, लेकिन कभी कभी जैसे यूट्यूब से मैं वीडियो देखता था, तो मैंने भी एडुकेयर के भी काफी वीडियो देखे जो रियली इम्प्रूव माय जनरल नॉलेज, थिंकिंग हम्म, स्किल्स, एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट इन माय MSCT examination. So thank you for your entire team, and you also for your effort and ओके। for काफी being अच्छा लगा, with us. काफी अच्छा लगा कि आप हमसे जुड़े थे काफी समय से, और हमारा जो चैनल है या फिर हम किसी भी रूप में आपको हेल्प कर पाए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड वेलकम। जो भी आपने हमें थैंक्स कहा, Thank you. सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन इन आईएलएस। कीप इन टच, अगर आपको Thank, कोई भी हेल्प चाहिए कैप राउंड के दौरान, यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस। फाइन, थैंक यू सो मच। thank you so much, sir. Thank you.